what should be the target of every trader? Should you aim as a trader to earn 1% a day, to earn 10% a day, or to earn 1 lakh rupees a month? Well, my friends, in this video, I'm going to explain everything so that you have the right target for yourself. And be sure to watch this video till the very end. Why? Because if you watch this video till the middle, it will not make sense to you as much so much so that you might even get the wrong message. So please be sure to conclude yourself after watching the entire video. Ready? शुरू करते हैं. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets, and we provide a full trading course in stock markets where we teach you trading and fundamentals, a full mentorship course. If you're interested in that, my friend, link of that program is in the description below. अब बात करते हैं what should be the target of every trader. As a trader, what should you keep as a target? Now, सबसे पहली चीज, having a target is very important. If you're someone who does not have any target और बस there you're just planning that I'm going to give my best, that's not going to work out. मतलब at least that doesn't work out for me. क्यों? If suppose in my gym, if my trainer tells me that Harsh, give me your best, do as many push-ups as you can, तो एक मिनट में ना I might do 10, 12, खत्म. बट अगर मैं ट्रेनर टेल्स मी हर्ष मुझे 20 पुशअप चाहिए, 20 पुशअप के पहले उठ मत जाना, जस्ट डू इट. आई विल बेग, आई विल प्लीड, माई आर्म्स विल शिवर, बट मैं 20 पुशअप्स निकाल लूंगा. दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट अ टारगेट इज, राइट? सो यू डेफिनेटली शुड हैव अ टारगेट फॉर ट्रेडिंग. Second, what should be your goal and target for trading? It depends on you. It's very subjective. क्यों? It depends on your risk. It depends on your liabilities. It depends on how much money you need. It depends on your monthly expenses. It depends whether your expenses are based on trading or not. बहुत चीज़ों में depend करता है, ठीक है? So again, if you don't know this, जब हम अपने students को बताते हैं, we teach them first portfolio management so that they can understand what is best for them. They can calculate the risk of themselves and then decide to make an entire roadmap. But so you should also do that. And if you haven't, तो मैं ये अभी जो आपको बता रहा हूँ टारगेट, ये बहुत जनरल बेसिस पे है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज टू बी सब्जेक्टिव टू ईच एंड एवरी पर्सन. इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन. अब जेनरिक बेसिस में बात करते हैं. सबसे पहले अब लोग मुझे बोलते हैं हर्ष, और मुझे वेबिनार में बहुत क्वेश्चन आता है, हर्ष हाउ मच in how much time will I earn 1 lakh rupees a month? In how much time will I earn 1 lakh rupees a month? Now this question itself is so ridiculous. I'm not here to offend anyone. मैं आपको honestly बता रहा हूँ, it's so ridiculous और juvenile. मतलब पता चल रहा है कि जिस आदमी ने question पूछा है, he is completely new to stock market. हो सकता है you are also asking this to yourself. ठीक है? Now understand the logic behind this. अब if you want 1 lakh a month, मैं तो I can say कि invest 1 crore, तो आपकी 1% रिटर्न आ जाएगी, तो 1 lakh per month हो गया. Does it make sense? It does not. हमेशा whenever you calculate your returns in trading in stock markets, finance में you will only look at percentile figures. The difference between a financially literate person and a financially illiterate person is that financially illiterate ना, he will only talk in absolute numbers, 1 lakh, 2 lakh, 10,000. Financially literate person will talk in inflation, 1%, 10%, 12%. Talk in percentages. So you need to understand, आप कैलकुलेट करो कि आपका कितना परसेंटेज बैठ रहा है, आपका रिटर्न ROI कितना है. इट डिपेंड्स ऑन द कैपिटल यू पुट इन ना. अब अगर आपने 10,000 डाले हैं एंड यू आर 10,000 में यू आर अर्निंग 5,000 रुपीज, इसका मतलब यू आर गेटिंग 50% ROI, तब तो भाई यू आर अ जीनियस, यू आर एब्सोल्यूट जीनियस, राइट? ऑन द अदर सिचुएशन, 10,000 में 50% ROI में यू आर अर्निंग 50,000. ऑन द अदर सिचुएशन, ऑन 1 लाख रुपीज यू आर अर्निंग 50,000. ठीक है? 50,000, लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है? On the other situation, 1 lakh rupees में you're earning 50,000. Does it make sense percentile wise? बिल्कुल भी नहीं. So अब difference देख रहे हो? All it matters is percentage. तो हमेशा talk in terms of ROI. Talk in terms of percentile, my friend. Never tell yourself that I want to earn 10,000, 20,000 a month. It does not make any sense. है ना? प्लीज समझो इसको. सेकेंड चीज बात करते हैं. अब चलो यू टेल मी दैट हर्ष, ओके, आई विल टेक माई टारगेट इन ROI. ठीक है? सो आई विल टेक माई टारगेट इन परसेंटाइल फिगर. दैट्स ग्रेट. But what should be the target? Now, there are several people on the internet who tell you that you can earn 10% a trading day. 10% in one trading day. There are people on the internet who tell you you can earn 1% a trading day. Heck, there are people on Instagram, on my phone. I've just seen several stories where people have claimed that they have been earning 1% a day, और यहाँ पे screenshot आ रहे होंगे, 10% के screenshots आ रहे होंगे, and this and that and this and that. ठीक है? अब एक और दोस्त रियलिटी की बात करते हैं. Now think logically. If you are earning 1% a day,
इसका मतलब क्या हुआ, एक महीने में देर आर अराउंड 20 ट्रेडिंग डेज, यू रिमूव द वीकेंड्स, सो यू आर अर्निंग 20% in 1 month. So in 1 month you earn 20%. It means that in 1 year, 20 into 12, you will earn 240%. If you're earning 240%, which mind you is 240% return is much more than some of the biggest MNCs out there. If you earn 240% and you continue to earn 240% for the next 6 to 7 years, आप 240% कमा रहे हो, you are in the top 50 richest people on this country, on this planet. If you're earning 1% a trading day for the next 5 to 7 years, you are in the top 50 richest people of the world. ये कंपाउंडिंग प्रिंसिपल है. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू अर्न 10% अ डे, 10% अ डे, एक महीने में 20 दिन हो गए, तो एक महीने का लगा लो 200%, तो यू आर अर्निंग 2400% अ ईयर. एंड पीपल आर एक्चुअली सेलिंग यू स्टफ, टेलिंग यू दिस एज अ टारगेट. इट इज कंप्लीट, इट्स अ जोक, इट्स अ कंप्लीट जोक. ठीक है. सो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस. ट्रेडिंग को ऐसे मतलब प्लीज, मतलब हाउ, जस्ट इमेजिन हाउ रिडिकुलस इज. अगर इतना 10% अ डे और 10%, इवन इफ यू आर अर्निंग 1% अ डे कंसिस्टेंटली, it is much more profitable than many of the MNCs. Then why is Mukesh Ambani running Reliance Industries? भाई वो ट्रेडर क्यों नहीं बन जाता? He can hire traders. Why is Mark Zuckerberg, Elon Musk doing this? Why is Azim Premji doing this? Why can't he just start trading? Now, am I saying is it not possible 1% a day? It is. I'm sure it is. But ये consistently long term में possible है ही नहीं. Why? Because the risk you will be taking is extremely high. आप इतना high reward expect कर रहे हो, risk कितना लोगे? Risk reward ratio को लगाओ, you will take extremely high risk. It does not make any bloody sense. It's a insane target to have. और बहुत लोगों का ये target होता है. उल्टा मुझे तो बहुत लोग इंटरनेट पे गाली देते हैं कि ये टारगेट नहीं है, तो अच्छा तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है. मतलब ठीक है, आई गेट इट, दे आर इमेच्योर, अभी यंग है, वो नहीं आए, आई गेट इट एंड आई डोंट माइंड इट, इट्स कंप्लीटली देयर चॉइस. बट अब आप समझो मेरी बात को समझाना चाह रहा हूँ. ठीक है. अब थिंक अबाउट इट. अच्छा, डू वन थिंग, वॉच निखिल कामत्स इंटरव्यू विद रणवीर, द बियर बाइसेप्स, राइट. तो रणवीर अलाहाबादिया, तो मैं आई रियली लाइक वॉचिंग हिज पॉडकास्ट, सो यू कैन वॉच हिज पॉडकास्ट. ये मैं लिंक ऊपर कर दूंगा. उस पॉडकास्ट में देखना, Nikhil Kamath says, who is one of the founders of Zerodha, and he is also a successful trader. He says that if you're earning 10% a year, you are doing very well as a trader. जो fact है. If actually आपको बता रहा हूँ, if my friend you are earning 10 to 12% a year every year from trading, you are not here. You are one of the top dogs in the world. You are one of the top dogs in the world. That's a very very respectable amount. And यहाँ पे लोग people want to earn 1% a day. और 10% अ डे रादर, राइट. तो प्लीज इसको समझो. अब आगे बढ़ते हैं. इज दैट हर्ष, चलो आई विल नॉट टेक एन एब्सोल्यूट फिगर्स. हर्ष, चलो 1% अ डे, 10% अ डे इज रिडिकुलस. देन व्हाट शुड बी द टारगेट? यू टेल मी व्हाट इज द टारगेट. Okay, so for me and for all my students, there is one simple target. You know what the target is? Beat the index. You need to beat the returns of Sensex. You need to beat the returns of Nifty. You need to beat the index. Now again, you will not beat the index in one day. कि अच्छा एक दिन Nifty is 500 points up. I have had a more profit, so I am winner. नहीं, you cannot compare yourself to the index in such a short period of time. Take at least 7 to 8 months. At least 7 to 8 months. What do I mean by beating the index? By overpowering the index. What do I mean by this? Is that if Nifty, let's say I'm taking Nifty, if Nifty is minus 10% at the end of 7 months, you should be minus 9.9%. You have beaten the index. If Nifty is plus 12%, you should be plus 12.1% to beat the index. This is what you need to do. And if you consistently beat the index for 5 to 6 years, my ladies and gentlemen, surprise, surprise, you are better than 60, you are better, let me just take this fact, एक second. You are better than 85% of the portfolio and fund managers of the world. Of the world. हाँ, you might say stock market इतना easy है. हाँ. You might say trading इतनी difficult है. हाँ. So to beat the index is as easy or as difficult as it may sound to you. This should be your target. Again, I might be sounding a pessimist to you कि हर शायद या तुम तो एकदम ही pessimist हो and you being so aggressive. I'm not being aggressive. हाँ, हो सकता है I am being aggressive, but I want you to understand कि दोस्त समझो यार. Please understand this. If you have such unrealistic expectations, how much risk will you take? Ripert हो जाओगे. And think about this. All the people who have come before you in trading and they have not succeeded, are they stupid?
वो बेवकूफ लोग हैं. If you're thinking कि वो बेवकूफ है and you are the only smart one, dude, come on, what are you thinking? So assuming they also did their best and they put the level of best effort, you know why did they get finished? And this is in 99% of the cases. 99% of the cases because they have unrealistic expectations. They are targeting for 1% a day, 10% a day, 20% in 1 month. It is a ridiculous expectation. इतने high reward के लिए the risk they take is extremely high. They have extremely high leverage positions. They have extremely scary positions in short selling, in options and futures. और एक बार market does not react in the way we expect, obviously all the traders get wiped out. This is the reason. You don't believe me? Go to Quora and read it. समझो, please have realistic expectations in stock markets. If you're thinking that you're not going to earn 1% a day, क्या बोल रहे हो यार? तो industrialist क्यों नहीं है markets में फिर? What you should target is to beat the index, and if you've done that, you have done a major thing. एंड यू माइट फील कि हर से बीट द इंडेक्स तो बड़ा क्या है. आई नो, बिकॉज आपको मेंटली ट्यून ऐसा कर दिया कि स्टॉक मार्केट में घुस के यार आप डबल कर दोगे हर महीने पैसे, हर महीने 1 लाख 2 लाख तो ऐसे घुमाओगे कि भाई ओ हो मजे आ जाएंगे. ट्रेडर्स रेपुटेशन क्या है? अरे ट्रेडर वो तो करोड़ों कमा लेते एक दिन में. दिस इज कंप्लीटली स्टूपिड. अ ट्रेडर हैज टू गो अकॉर्डिंग टू हिज रिस्क एंड अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टम्स. राइट. सो इफ दिस वॉज द केस, जो लोग पिक्चर दिखाते हैं ट्रेडर्स की, तो एवरी ट्रेडर वुड हैव बीन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, राइट? बट दैट इज क्लियरली नॉट द केस. Traders तो आते हैं, only investors out there, majorly investors out there. You might argue there are some traders which they are. So please, concluding everything, what target should you have? You should have a target to beat the index, and if you're doing that, buddy, you are in the top 15% fund and portfolio managers of the world. If you beat the index for the continuous 5 to 6 years. Well, that is for today. अब मुझे बताओ, what do you feel? Do you agree with me? Do you disagree with me? If you disagree with me, Harsh, you are mad. This is completely disagree. I'm going to earn 1% a day. I'm going to earn 10% a day. तो नीचे comment करके लिख दो, so that I want you to know and I want everyone else to know कि ऐसे लोग एक्सिस्ट करते हैं. दैट्स ओके, दैट्स योर ओपिनियन. एंड अगर आप अभी मुझसे बिलीव नहीं कर रहे, इफ यू डोंट अग्री विद राइट नाउ, बाद में यू विल अग्री. सो आई गेट इट, बिकॉज व्हेन आई आल्सो एंटर्ड स्टॉक मार्केट्स, मुझे भी लगता था नहीं यार मैं तो दिन का 1% कमाऊंगा, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग एंड यू माइट नॉट बी इन दैट स्टेज राइट नाउ. सो डेफिनेटली, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड विच स्टॉक मार्केट स्टेज आर यू इन, आप किस स्टेज में, क्योंकि हम सब इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की ना सेम जर्नी होती है. सो आई हैव मेड अ वीडियो हियर, द जर्नी ऑफ एवरी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर. इट्स ब्यूटिफुल, it's chef kiss. So it's beautiful. Watch that, क्योंकि हम सबका ना एक सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है. तो आई हैव कम आउट ऑफ दैट जर्नी व्हेन आई हैव रियलाइज्ड एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अदर पीपल रियलाइज. यू माइट बी इन दैट जर्नी कि यू आर स्टिल इन दैट एक्सप्लोरिंग फेज. तो वॉच दैट, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. और नीचे कमेंट करके बताओ हाउ डू लाइक द वीडियो. नीचे कमेंट करके बताओ डू यू एग्री विद मी. नीचे कमेंट करके बताओ इफ यू हैव वॉच्ड द निखिल कामत एंड द रणवीर शो पॉडकास्ट. इट इज ब्यूटिफुल. एंड ऑल्सो वॉच द नितिन कामत, इट्स ऑल्सो नाइस. सो या नीचे कमेंट करके मुझे बताना. वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस, जहाँ पे आई टेल यू द ट्रूथ ऑनेस्टली टू योर फेस, नॉट टू प्लीज यू, नॉट टू offend you, but giving you truth. My friend, you know what to do. Just click the subscribe button, because trust me, that will give you the highest return. So click the subscribe button, like the video, share the video. My name is Harsh Goyla. Give my regards to your elders, love to your young ones. This is Goyla School of Finance, financially empowering you.